since you're also the author of Energy Arbitration Online Certificate course provided by DGEF. So, sir, can you please tell us something about the best practices in drafting an arbitration agreement? Okay, absolutely. So while drafting an arbitration agreement, there are few checklists which have to be followed, and उसमें हमेशा अपनी कंपनी के हिसाब से आपको चेकलिस्ट पहले बना लेनी चाहिए कि भाई arbitration agreement में क्या-क्या clauses होंगे. And this is a part of dispute resolution strategy. So you are doing two things actually together. One is you are making a dispute resolution strategy for your company, and secondly जो वो reflect करता है वो arbitration agreement में reflect कर जाए. अब हम ये देख लेते हैं कि arbitration agreement में जो major चीजें हैं, जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं, वो क्या-क्या होनी चाहिए. So एक important aspect है, अगर हम arbitration agreement में venue mention करते हैं, there will be lot of clarity actually. So it should be always clear where the venue of arbitration should be there in case a dispute arises actually. क्योंकि आपने अगर venue नहीं लिखा, तो then there is lot of litigation, international and national litigation as to what is the appropriate venue actually. So that has become important. Second is timeline also becomes important. So arbitrators may take ages to decide the matter, and I understand जो recent amendment हुआ है Arbitration Act में, वो clearly कहता है कि 1 year plus 6 months. So 1.5 साल में arbitration dispute should be resolved, and that is absolutely correct. और अच्छा, this was one of the best amendments because I have seen arbitration proceedings going on for 3, 4, 5 years. So we used to discuss it was better कि हम civil suit file कर देते या normal courts में चले जाते, तब भी हमारा matter decide हो जाता actually. So लेकिन timeline क्यों important है? भाई आपको जरूरी नहीं है कि 1.5 साल में या 1 साल में dispute resolve करना है. If you mention in the arbitration agreement that dispute has to be resolved in 3 months, it has to be resolved in 3 months. It is allowed. 1 साल और 1.5 साल जो लिमिट फिक्स करी है, वो मैक्सिमम लिमिट फिक्स करी है. मतलब the arbitration act says कि भाई 1 year or shorter time. So effectively, if you think it is a small dispute, उसके कारण काम रुक रहा है, आप उसमें लिख सकते हैं कि 1 month, 30 days में it should be decided. You can also write it that day-to-day hearing should take place, so that arbitrator does not sit in his sweet will कि जब उसको मन है तो rest house book कराएगा, and then he will say a 5-star hotel should be booked, and then he takes the sweet time to book. So in the arbitration, to protect your company, to protect your own organization, you can have these clauses in arbitration agreement. Whoever is the arbitrator who will do day-to-day hearing actually. So every day hearing will happen. Third important thing is language. It will be very convenient if you write what language your company's company prefers. So there is no issues with respect to language. कोई बोलेगा national language है, कोई international language बोलेगा, कोई और कुछ. If there is one party is from France and one party is from India, and you have not mentioned the language, so they will assume that it should be in French, and you will assume that it should be in English or Hindi or any other language. Mention the language. It becomes super easy for arbitrator also. You can also mention the qualification of arbitrators. So qualification in the arbitration. See, I am telling you few points of checklist. Every company has to make its own checklist for arbitration agreement. And arbitration agreement should be part of all major agreements actually. Generally, what I have seen is arbitration agreement को ना एक clause में डाल देते हैं या 1, 2, 3 paragraph में डाल देते हैं arbitration agreement. मैं कहता हूँ कि annex में डाल दो arbitration agreement, ज़्यादा better होगा, उसमें लिख दो. Or the alternative way is that you take up institutional arbitration. So institutional arbitration में procedure already defined होता है, पर आप उस institution के arbitration procedures या rules लेकर पढ़ लो. So your team should be well conversant with the rules of that institution where you are referring, your matters for arbitration. So we were discussing about checklists to be followed while drafting an arbitration agreement, and this arbitration agreement is a part of your dispute resolution strategy. All right. So मैंने बोला कि venue लिखना चाहिए, timeline should be there, day to day hearing भी आप दे सकते हो, 2 महीने भी बोल सकते हो, 1 महीना भी बोल सकते हो, there is no bar actually. फिर language should be there, what is the language, there should be clarity. फिर उसके बाद qualification is of arbitrators is super important. What is happening is generally retired officers, senior officers, IAS officers and administrative officers, they are being appointed as arbitrators, and retired even judges are being appointed as arbitrators. But unfortunately, sometimes and most of the times they do not have background in power sector, and this makes it little difficult to explain them
सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर सेक्टर कि भाई पूरा फिडिक कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है वो पूरा समझाना पड़ता है हमें। फिर हमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में क्या लिखा है समझाना पड़ता है, ओपन एक्सेस क्या है हमें समझाना पड़ता है। अगर ये बेटर हो, अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आप क्वालिफिकेशन में लिख दो द पर्सन हुएवर इज बीइंग अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल should have experience in power sector for 10 years or 15 years, और उसको और स्पेसिफाई भी कर सकते हो, रेगुलेटरी, लीगल या आर्बिट्रेशन सेल में उसने वर्क कराओ 10-15 साल तक, इट इज अलाउड। सो व्हाट विल हैपन, आप सब लोगों का, हम लोगों का टाइम कम हो जाएगा उनको समझाने। दे विल ऑलरेडी, बिकॉज दे हैव वर्कड इन द पावर सेक्टर फॉर 10 years, दे हैव टेकन ऑल द ट्रेनिंग। जैसे आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको पता है कि ओपन एक्सेस क्या है, उनको पता है पावर सेक्टर की जो बेसिक न्यूएंसेस हैं वो क्या है, उनको पता है फिटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, या और भी बहुत सारे इश्यूज जो है, बेसिक स्ट्रक्चर पता होता है। तो arbitrators take less time to decide the matter. It will be, there will be more clarity during arbitration proceedings. So, and it can be a balance also. So maybe one, retired officer can be, chairperson, or a retired judge can be one member, and other members can be with experience in power sector of 10 to 15 or 20 years, which will expedite. So this qualification should be mentioned in arbitration agreement, which will make it super easy for the litigant and the arbitrator also. Next, one checklist can also be that कि आप ad hoc arbitration करना चाहते हो या institutional arbitration करना चाहते हो. So institutional arbitration में you have to choose कि किस institution के पास. So to make it, generally arbitration ढूंढने में दिक्कत होती है. Arbitration का it is procedural actually. Master arbitration क्या है? It is a procedure. So जैसे सिविल प्रोसीजर कोड होता है और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है, तो थर्ड प्रोसीजर जो है वो प्राइवेट प्रोसीजर है, वो आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर। सो यू हैव टू बी अ मास्टर इन प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उसका टेक केयर करने के लिए वी हैव इंस्टीट्यूशंस। देयर आर लॉट ऑफ आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशंस, वी विल डिस्कस सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस आल्सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर डिस्कशन। बट यू कैन डिसाइड कि आप कौन से, आप इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं या आप एड हॉक, where the parties will decide who are the arbitrators, or you will pre-decide that this person will be arbitrator. That has to be mentioned in the arbitration agreement. So once a dispute arises, you don't go running out कि क्या procedure apply करना है। Next है, कई बार छोटे छोटे disputes में जो dispute documents के बेस पे भी साइन होते हैं, documents के बेस पे भी रिजॉल्व हो सकते हैं, उनमें भी पूरा प्रोसीजर आर्बिट्रेशन का फॉलो करा जाता है। कई बार तो कॉस्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डिस्प्यूट इटसेल्फ। रिसेंटली, एंड दिस इज अ डिफरेंट एग्जांपल, बट रिसेंटली आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल वाज अपॉइंटेड। दे फिक्स्ड देयर ओन फीस 5 lakhs पर सिटिंग एक्चुअली। तो 3 जजेस थे, 3 मेंबर्स थे आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के, तो 15 lakhs पर सिटिंग ओनली फॉर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, एंड लंच के बाद दूसरा सिटिंग हो जाती, तो 30 lakhs for, so these costs are very very huge. In your arbitration agreement you can also mention what will be the payment given to the arbitral tribunal. You will contain your cost. Okay. नेक्स्ट चेकलिस्ट आप ये क्लियर कर सकते हो, जैसे अगर कोई इशू तुम्हें लगता है या आपको लगता है कि these small issues there is no requirement of oral hearing, you can write in the arbitral agreement that these disputes will be decided by documents, on the basis of documents only. No requirement of a person or law officer visiting the arbitral tribunal and discussing and then somebody arguing the matter. It is perfectly okay. And कई बार लोग ये पूछते हैं कि सर आर्बिट्रेशन का, एनर्जी आर्बिट्रेशन का अलग से कोर्स बनाने की क्या जरूरत है? दिस वाज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंडस्ट्री एक्चुअली, बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये हमारे इंडस्ट्री में अप्लाई बहुत रेयरली हो रही है एक्चुअली। हम लोग सीधे सीधे जंप करते हैं बहुत बड़ी बड़ी चीजों में कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है, इंटरनेशनल कोर्ट में क्या बोला है, ये इसमें क्या बोला है। दे आवर ऑब्जेक्टिव शुड बी टू रिजॉल्व डिस्प्यूट एंड टेक द मैटर फॉरवर्ड। हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने और इंटरनेशनल आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल तो बहुत चीजें बोली हुई है। So these small things which will have a big impact on resolving the dispute quickly, to safeguard the financial aspect of a power company are important, and this will in turn promote right to energy movement also actually. If the disputes are decided in 1 month, if everyone says कि ठीक है small dispute 30 days में decide होनी चाहिए, और जितना भी बड़ा dispute हो, कितना भी बड़ा dispute हो, 6 महीने से ज्यादा क्या लगाओगे आप भाई? आप day to day hearing करो, उसको close करो।
It may be a 10 lakh crore dispute. How does it matter? Whatever arbitrators and everyone will understand in 5 years, let us understand in 6 months and close it. Revenue of the state and price escalation, तो we have already seen कि कितना price escalation हो जाता है delay project में. ठीक है? All right. So next चीज है, एक चीज और भी है कि आप arbitration agreement में you can write about protection of trade secrets also. And you can even trade secret तो छोड़िए आप अपने award को भी confidential कर सकते हैं. So whatever may be the award, you can write in arbitration agreement कि it will not be disclosed to anyone besides the two parties, nothing doing. So what happens, whatever confidential information आपके hydroelectricity plants है, उनकी designs हैं, या any new thing which you have discovered or you have innovated, and maybe it is a matter of national security also, border area में project है कोई भी, so आप ये clause include कर सकते हो arbitration agreement में कि आपके trade secrets protected रहेंगे and arbitration award itself will be confidential. So even the arbitral tribunal cannot disclose whatever award they have given actually. It will be between the two parties only. So एक और जो whatever is the next checklist can be कि whatever is the composition of arbitral tribunal, that you can also decide, you can also place it there in the as a checklist of arbitration agreement. उसके बाद एक और चीज है which we forget, limitation of raising arbitral disputes. Sometimes we see कि after 3, 4, 5 years people are raising arbitration dispute. भाई लिमिटेशन एक्ट में भी लिमिटेशन है कि 3 साल बाद फाइनेंशियल डिस्प्यूट नहीं रेज करना है, बट आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट आप 5 साल बाद रेज करोगे तो कैसे काम चलेगा? सो इन द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट यू आर अलाउड टू राइट व्हाटएवर इज लिमिटेशन ऑफ रेजिंग आर्बिट्रल डिस्प्यूट. सो यू कैन डू कि भाई व्हाटएवर डिस्प्यूट इज देयर आप प्लीज रेज इट इन 3 months, नॉट मोर देन दैट. भाई वहीं पे खत्म करो उसको डिस्प्यूट को. 3 महीने में जो भी अगर आपको इशू आ रहा है, 3 महीने का टाइम है, 10 महीने का टाइम है, 1 साल का टाइम है, जो भी व्हाटएवर इज सुटेबल टू योर कंपनी शुड बी clearly specified. You can also, if another एक और checklist की बात करें, तो what will be the regime of penalty? Mention it in arbitral agreement. It is allowed, perfect. नहीं, unknown penalty से better है कि known penalty है कि अगर ये गलती हुई है ये penalty होगी. ठीक है? So Ayushi, I've just see every company will have their specialized checklist. Every company will have their specialized dispute resolution strategy depending on what kind of organization it's this and what are the stakes involved, who are the stakeholders. उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. बट जो नॉर्मल चेकलिस्ट है जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इफेक्टिव बनाएगी, उसमें से कुछ मैंने बताई है. जैसे वेन्यू क्लियर होना चाहिए, टाइमलाइंस डे टू डे हियरिंग होगी कि 3 महीने में खत्म करना है, ये क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज शुड बी देयर. फिर उसके क्वालिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल शुड बी इन योर कंट्रोल. If it is not in your control, then go to apply CPC, apply the normal procedure of the court, file a petition. The purpose of arbitration, going in for arbitration, was that quickly you dissolve. It is a private court actually. आप फटाफट उसको dissolve करके आगे बढ़े, काम में focus करें, not in fighting up whatever your contractor or anybody, your user or consumer actually. So oral hearing भी आप लिख सकते हैं, फिर आप trade secrets भी protect कर सकते हैं. You can decide that arbitration award should also be secret. You can also decide that क्या composition होना चाहिए arbitral tribunal का. Limitation भी आप रख सकते हैं कि भाई this is the limitation. जिस दिन incident हुआ है या जिस दिन due हुई payment, उसके 3 महीने के अंदर ही आपको raise करना है arbitration. You can even write 1 week because the other party will accept and sign it. Regime of penalty भी clear होगी. So these are the things which should be in general taken care of while drafting a arbitration agreement. And dispute resolution strategy भी आपकी कंपनी में इनबिल्ट होगी. दोनों साथ में, they are brothers and sisters, they go together actually. So hope I have answered the question. Ayushi, back to you. Thank you so much, sir. That was very insightful. So I understand that keeping in view how overburdened our courts are, every company must have an arbitration agreement. And that's all the time we have for the energy dialogue. DGEF Namaskar and happy learning everyone. DGEF Namaskar to all of you and happy learning, and thank you for supporting Right to Energy movement. See you all again.